Hello everyone, I am Krishna Agrawal and today we are going to discuss the summary of week 3 of the subject Basic Entrepreneurship for Engineers. So in this video we will be discussing things which we learned this week in our classes. The very first thing is 6 thinking hats. As usual I have written down the key points and one by one I will be explaining all these key points. Number 1 is 6 thinking hats. Six thinking hats is a very good concept and an important concept which helps in identifying which helps in better understanding of our problem. Let's see by this image. There are six kind of hat: white hat, red hat, blue hat, green hat, yellow hat, and black hat. All these type of hats signifies all these type of head have their own importance and their value. So let's understand all these hats one by one. First of all, white hat. White hat signifies the data, facts, and information that we must know regarding our problem. While identifying the problem, it is very important to gather and to collect all the data, facts, and informations regarding that problem in uh, every aspects. The next one is the red hat. Red hat, red hat simply explains regarding the feeling, reactions, vibes, or emotions that is attached related to that problem. That is how we feel. That is guilt, instincts, emotions, intuitions, and any kind of those feelings is expressed by red hat. Okay, so all these emotions come under red hat. Next one is the blue hat. Blue hat manages the process, it listens and direct attentions, integrates and then move forward. So the purpose of the blue hat is basically to listen all the facts, emotions and all the points regarding that problem and to direct the attention towards solution and moving forward. The next one is green hat. Green hat symbolizes of creativity and surprises, alternatives, reframing, out of the box ideas, and what ifs. So basically, green hat signifies our thinking of out of the box ideas that can help us to solve our problem. It helps in reframing the problem, thinking about alternatives, putting creativity and surprises in our solution. The next is the yellow hat. Yellow hat signifies sunshine and positivity, optimism, possibilities, upsides, and potential. Basically, this hat signifies possibilities. What are the possibilities we have related to the particular problem, and encourages us to be to use optimistic approach, to think of upsides and potentials, to think of positivity. The last one is the black hat. Black hat all black hat signifies caution, skepticism, dangers, threat, and all that negative aspects. Example drawback, risk, worst scenarios that must be known before applying any idea to the problem. So these all six hats, this concept of six thinking hat is very important to briefly identify our problem and our solution and before implementing it in the market. A person or a team must use this six thinking hats technique to better understand and deepen their knowledge about their problem. Okay, so this was all about the six thinking hats. The next come is this diagram. Let's see it here itself. This is a diagram taught to us which signifies the importance of which signifies importance of divergence and convergence thinking. How a wicked problem, which we have learnt earlier, wicked problem can be solved using the convergent and divergent thinking and using this technique of empathize, define, ideate, prototype and test, which we basically
learned as design thinking in our previous lectures. So the very first thing is applying divergent approach, means thinking all the way where one can think without putting any restrictions on their ideas and thoughts. Basically, this comes under empathies. Empathies means living in that problem and identifying the actual problem, the root cause of problem, and surrounding yourself with that problem in order to better understand it. Next is define. Define means we have already learned all these terms. Define, we define the problem and we think of solutions related to it. And then ideate. Ideate means thinking of a particular solution or out of all those things which we have emphasized and defined. Ideate is a step in which we think of a particular and specific problem related to our solution. Next is prototype. Prototype means developing a small model or small working model that can be used to test in the public, test for public, and we can see whether our problem is getting solved or not using this prototype. If not, then we must come back to these three, either of these three steps, and think or recreate about these steps. And if the prototype successfully works out, then we must go to the test step number 5, test, which means applying our solution in the market. And this thing can be also understood by divergent and convergent thinking. First, we think divergently about the problem, and then we come to a conclusion via convergent thinking. And once we can come to a conclusion, the conclusion can again we can again identify problems in that solution or that conclusion. Then again, the divergent thinking must be applied, and further convergent thinking be applied. Convergent thinking must be applied in order to gain the solution, right? So our next topic is now problem litmus test. Problem litmus test is basically, it can be understood by the name. We do a kind of litmus test which helps us to identify a real and practical problem of which we can come out a solution with. So for a better understanding of this term problem litmus test, let us see an image. So let's see this image. This image has several points which must be studied and researched carefully in order to identify the actual problem and opportunities related to that. So here written is, before investing resources, rigorously assess the viability and potential impact of problem we aim to solve. We first have to go through all these points in order to identify whether the problem is solvable or not. Let's see all these steps one by one. The first step is market size. Is the addressable market large enough to sustain a scalable solution? It is an important term. We must think of how bigger is our the size of market, the solution we are building of, whether that solution have specific or the market size or the person who are going to use that solution for their benefit. And if market size is large enough that your solution can be scalable, then it is good to go with that solution ahead. The next thing is pain intensity. Pain intensity refers to how severe is the problem for the target audience. Is it a vitamin or a painkiller? So basically, this term indicates that uh, what is the intensity of the problem that is faced by your target audience. Okay, so sometimes there are several problems which is not big enough or not of greater intensity that is faced by the target audience, and they can easily be surviving or living happily without your solution. So in that case, one does not need to develop a good solution for that problem. But in the case where the intensity of the pain is very high, in case for example the audience is surviving, but they are very much awaited for a particular or specific solution of their problem. So in that case, the value of solution increases even more.
This is referred as pain intensity. Okay. And next thing is now existing alternatives. This must be carefully studied. What are the alternatives of the particular problem that exists in the market? What are people currently doing to solve this problem, their problem? Are they effective or clunky? You must first know that what the current situation is of your customers, in what ways they are trying to solve their problem, right? And now come to next point, that is customer psychology. It is also a critical thinking process which require examining lot of customers based on how they think of. Does the solution require significant habit change? How ingrained are current behaviors? This point focuses on whether your solution require a habit change to your customers. In that cases, the psychology of a customer becomes important, as not all the customers are willingly uh, are willing to change, want to change their behavior for your solution, right? The next point is willingness to pay. Are customers ready to pay for a better solution, and what's their perceived value? इसका मतलब क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे, या क्या आपको कस्टमर आपके सॉल्यूशन के लिए पे करने के लिए विलिंग है? और ये तभी होगा जब आप एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो कि इफ़ेक्टिव भी हो, बेनिफिशियल भी हो एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर्स। जब आप ऐसा कोई सॉल्यूशन लाएंगे तभी कस्टमर्स की जो विलिंगनेस टू पे है वो इंक्रीज होगी। ओके। Next point is lovability. Whether the customers love your solutions or not, genuinely love it or not, right? So this is all about problem litmus test, evaluating opportunities. This test must be performed to identify a problem in a much better way. Let's come to next point, that is differentiation strategy. How can I differentiate myself? So these are some of the key points that you must inherit in order to differentiate yourself from the other entrepreneurs. क्या क्या आदतें आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों से अपने आप को अलग कर सकें, ताकि आपके जो आइडियाज़ है, आपके जो सॉल्यूशंस है, वो लोग अपनाएं, वो फॉलो करें। यहाँ कुछ क्वालिटी है, लाइक द फर्स्ट इज यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। आपके आइडिया में ऐसी कुछ यूनिक सी क्वालिटी होनी चाहिए, यूनिक सी वैल्यू होनी चाहिए, या यूनिक बातें होनी चाहिए जो वैल्यू ऐड कर सके इन द लाइफ ऑफ और इन द प्रॉब्लम और इन द सॉल्यूशन ऑफ योर कस्टमर। इफ दिस थिंग हैपन, then a customer will be very happy using your solution and not of your existing competitor. Okay, this is a very important thing that must be proposed in your idea in order to succeed. Next is deep customer understanding. Deep customer understanding means understanding the psychology, the emotions, the personas of different customers in order to build and develop a really good and feasible solution for every customer. And this type of quality requires examining and studying several customers, for example 200 to 500 customers related to your problem. अगर आप बहुत सारे कस्टमर्स से बात करेंगे, उनसे लाइक इंटरव्यू वगैरह लेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि वो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और डीप डाउन उनके हार्ट में क्या चल रहा है वो समझ पाएंगे, जिसको समझने पर आप उनके लिए और बेटर आइडियाज़ और बेटर सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे, राइट? नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट अदर्स कैन नॉट ईजिली रेप्लिकेट। हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ध्यान देना है जो कोई दूसरा ईजिली रेप्लिकेट ना कर सके। अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते जो कोई भी आके रेप्लिकेट कर सके तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसका सॉल्यूशन लेके मार्केट में आ जाएंगे। बट अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम में काम करते हैं जिसका सॉल्यूशन कोई दूसरा रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट? So this was all about differentiation strategy. Next is problem statement canvas.
we will be understanding this by one image. Let's see this one. Problem statement canvas. This canvas consists of some of the columns like described here. Let's understand this one by one. First is context. Context mean when does the problem occur. इस इस टेबल में बेसिकली हम अब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम कब होती है. ये जो है, ये जो चार्ट है वो एक ऊबर का वो एक ऊबर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैनवास है जो ऊबर कंपनी आई थी. तो अकॉर्डिंग टू ऊबर, लेट्स से हम ऊबर के एग्जांपल से समझते हैं. ऊबर के जो कस्टमर्स हैं वो कब कब प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो एवरी वर्क डे इन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग फॉर एवरेज 2-3 आवर्स पर डे, राइट. फिर है क्या प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या होती है इनकी प्रॉब्लम की. वो लूज टाइम इन ट्रैफिक इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग मोर वैल्यूएबल. ठीक है, ये उनकी प्रॉब्लम होती है. देन अल्टरनेटिव्स क्या है इसके लिए. साइन अप फॉर ऊबर्स एंड एक्सेप्ट राइड्स. तो ऊबर साइन अप करे एंड एक्सेप्ट द राइड्स टू सेव टाइम एंड एनर्जी एंड टू गेट rid ऑफ ट्रैफिक. फिर नेक्स्ट इज कस्टमर हु हैज़ द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफन. किसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, कौन, ऊबर के कस्टमर से. तो यंग मैन जो है 25 से 35 एज के, इनकी सैलरी मिडिल लो इनकम में फॉल करती है और जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इमोशनल इम्पैक्ट. कस्टमर को कैसा फील होता है जब वो इन प्रॉब्लम से फेस करते हैं. तो फ्रस्ट्रेशन फील होता है, बोर्डम फील होता है, ट्रैफिक में खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं. क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट क्या था कि ऑन एन एवरेज 40 आवर्स हर पर्सन लूज करता है अ मंथ. देन ऊबर की शॉर्ट कमिंग्स किसी ने निकाली, वो क्या थी कि ड्राइविंग फॉर ऊबर रिक्वायर्स मोर टाइम वेटिंग फॉर इट. राइड के लिए वेट करना पड़ता है और ट्रिप ओरिजिन और डेस्टिनेशन कई बार प्लान्ड नहीं होते, तो उससे कारण प्रॉब्लम होती है. ओके, सो दिस थिंग was all about the was all about our problem statement canvas. हम एक एक चीज़ इसमें स्पेसिफिकली डिफाइन करते रिगार्डिंग टू अवर प्रॉब्लम, राइट. नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज प्रॉब्लम विच आई हैव आइडेंटिफाइड. ओके, सो मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी. लाइक डिस्पाइट ऑफ अभी जो रेलवे के ऐप्स आ गए, यूटीएस ऐप आ गए, ऑनलाइन टिकट बुकिंग आ गई है, उसके बावजूद भी जो रेलवे स्टेशन रहते हैं उनमें बहुत लंबी लंबी भीड़, लंबी लंबी लाइन लगे रहती है टिकट काउंटर्स पे टिकट खरीदने के लिए. जो जनरल टिकट्स लोग खरीदते हैं वो जनरली वो लोग होते हैं जिनके पास ना मोबाइल होता है ना कोई भी ऑनलाइन पेमेंट के ऐप्स होते हैं. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता कि वो जाए और टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े हो, या तो एटीवीएम का यूज़ करे जहाँ पे एक पर्सन खड़े होकर उनको टिकट काट के देता है. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैनवास, लेट्स यूज दिस पॉइंट्स फॉर माय प्रॉब्लम. तो कब कब प्रॉब्लम आती है. तो प्रॉब्लम आती है जब लोग मेनली लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब लोग जनरली जनरल बोगीज में ट्रैवल करते हैं तो उनको टिकट खरीदने में प्रॉब्लम तो आती है. रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, टाइम लूज होता है स्टैंडिंग इन क्यूज, है ना, टाइम लूज होता है क्यूज में खड़े हो गए. ऑल्टरनेटिव्स क्या आ गए, ऑनलाइन टिकट बुक हो सकती है, एटीवीएम वेंडिंग, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जा सकती है ताकि टाइम बचे. कस्टमर्स कौन है हमारे, कस्टमर्स है रूरल के जो पीपल है जनरली या मोस्टली, जो इनकी एज है 30 to 60, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता और इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो हमारे कस्टमर्स हैं. क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट हमने देखा था कि लगभग 250 to 300 करोड़ का लॉस हुआ था, रिवेन्यू लॉस हुआ था इंडियन रेलवेज को. टिकट जो लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते थे उनके कारण. फिर स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज से टाइम वेस्ट होता है. ऑल्टरनेटिव शॉर्ट कमिंग भी हमने देखा था. तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रॉब्लम. सो दैट्स ऑल वी हैव लर्नड in our third week of the subject. So thank you for this and see you in the next video of the summary lecture of week 4. Thank you.